Good morning, student. Our topics impulse and Newton's third law of motion. Okay, so impulse. Impulse of a force is a measure of total effect of the force. That is the product of force and time interval the product of force and product of force and short time interval is called impulse. That is impulse is equal to force into time duration. Force into time duration, it is equal to the change of momentum. Change in momentum. देखिए, जब कोई भी किसी बॉडी के थ्रू अनदर बॉडी पर फोर्स वेरी शॉर्ट टाइम अप्लाई होता है तो दिस फोर्स इज कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स. फॉर एग्जाम्पल, in hitting a ball with a bat or in firing a gun, force is called impulsive force. Okay, so we can also written as the force which acts on a body which acts on bodies
for short time are called impulsive force. For example, in heating a ball, with bat, in firing a gun, This impulsive force or positive. This impulsive force is positive, negative, or zero. Three types. There are three types. Positive, negative, and third, zero. If the momentum of the body is increased, इसमें जो है कि मोमेंटम क्या होगा, कब पॉजिटिव कब होगा, जब मोमेंटम इंक्रीज करेगा। इसमें मोमेंटम डिक्रीज करेगा और यहाँ पर मोमेंटम अनचेंज होगा। जब मोमेंटम अनचेंज होगा तो इम्पल्स जीरो होगा। ओके, इसके बाद आता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। Third law of motion. Newton's third law of motion. If a body applied a force on another body, देखिए, then another body also applied same force but opposite direction on the first body. देखिए, एक ये बॉडी A है और दूसरी ये बॉडी B है, दोनों कोलाइड करते हैं तो बॉडी A फोर्स लगाती है
on the body B, FAB, एंड बॉडी बी भी ए पर फोर्स लगाएगी, बी ए। तो जितना फोर्स बॉडी ए लगाएगी बी पर, उतना ही फोर्स बॉडी बी लगाएगी ए पर। तो जो बॉडी फर्स्ट में स्टार्टिंग में पहले फोर्स अप्लाई करती है, यानी जैसे बॉडी ए बी पर फोर्स अप्लाई करती है, तो बॉडी ए के थ्रू जो फोर्स अप्लाई होगा, फोर्स एफ ए बी इज कॉल्ड एक्शन, and due to this action body B also force applied on the body A in the same magnitude. This force is called reaction. So if a body A applied a force on body B, if a body A applied force F1 on body B and body B applied same force on body A, same force F2 on body A. F1 is called action and F2 is called reaction. So according to Newton's second law of motion, according to Newton's third law of motion, according to Newton's third law of motion, according to Newton's third law of motion, to every action there is always an equal and opposite reaction. अपोजिट रिएक्शन, यानी बॉडी फर्स्ट जितना फोर्स अप्लाई करेगी बॉडी 2 पर, उतना ही फोर्स बॉडी 2 फर्स्ट पर अप्लाई करेगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, इसमें जो कि देख लीजिए, let delta P1 and delta P2
be the change in linear momentum of body A and B, of body A and B respectively, according to law of conservation of momentum, law of conservation of momentum, law of conservation of momentum, the net change in linear momentum of the system is 0. That is P1 plus P2 change है, इसलिए डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 इक्वल टू 0. यानी डेल्टा P1 इक्वल टू माइनस डेल्टा P2. Okay, dividing by delta T on both sides. Delta P upon delta T इक्वल टू माइनस डेल्टा P1 है, डेल्टा P2 बाई डेल्टा T. इफ टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल, दैट इज डेल्टा T टेंड टू 0. इफ सो लिमिट डेल्टा T टेंड टू 0, डेल्टा P1 बाई डेल्टा T इक्वल टू limit delta T tend to 0 minus delta P2 upon delta T. It is also written as dP1 by dt equal to minus dP2 by dt. ये क्या है? फोर्स ऑन बॉडी A इक्वल टू फोर्स ऑन बॉडी B. A equal to minus force on body B. This is Newton's third law of motion. Okay, thanks. ने नोट बनाइए, वीडियो देखिए, नोट बनाइए और कंप्लीट करिए. ओके, थैंक्स.